Now the next question is, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, prove that m square minus n square is equal to 4 root mn. If tan theta plus sin theta is m, tan theta minus sin theta is n, prove that m square minus n square is 4 root mn. ये prove करना है. So do one thing. Let us take the value of LHS, which is m square minus n square. Let us take the value of LHS, which is m square minus n square. M square minus n square can be written as m plus n into m minus n, algebraic identity. So m value is how much given according to the numerical? M value is this, no? Substitute. So just replace this m by this value. Instead of n, this value, and n value is this, no? So m के place में आप लिख दो, m के place में tan theta plus sin theta, tan theta plus sin theta, this is m value, plus n value is this, tan theta minus sin theta. So this whole is the value of m, this whole is the value of n. So m plus n into m minus n. Again m value is again tan theta plus sin theta. Tan theta plus sin theta minus n value is this, tan theta minus sin theta. So this is m plus n into m minus n. This is equal to tan theta plus sin theta plus tan theta, isn't it? Plus tan theta, plus के साथ plus tan theta plus into minus is minus sin theta into tan theta plus sin theta, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस tan theta. So minus tan theta, minus into minus is plus, minus into minus is plus sin theta. So minus tan theta, minus into minus plus sin theta. तो यहाँ ये minus sin theta, isn't it? ये minus sin theta, ये plus sin theta cancel. So that is equal to tan theta plus tan theta is 2 tan theta. यहाँ minus tan theta, this minus tan theta plus tan theta, minus tan theta plus tan theta cancel हो जाएगा. Sin theta plus sin theta is 2 sin theta. So 2 sin theta, that is equal to 2 into 2. 2 into 2 is 4. 2 into 2 is 4 sin theta tan theta. Sin theta tan theta. मैंने LHS का वैल्यू लिया है, LHS वैल्यू इसको सिंपलीफाई किया तो यहां तक आया है. से इक्वेशन नंबर 1, इसको इस तरह रहने दो. मैंने LHS, ये वाला वैल्यू, LHS का वैल्यू लिया है, सिंपलीफाई किया तो मुझे ये आया है 4 sin थीटा tan थीटा. आप एक काम करो, RHS का वैल्यू भी लेकर सिंपलीफाई करो. Now let us take the value of RHS. RHS is equal to 4 root mn.
दैट इज 4 इंटू रूट m। लेकिन m का वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। m के प्लेस में आप लिख दो tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n के प्लेस में आप लिख दो tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। 4 इंटू रूट mn, m का वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा, n का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये कैसा है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर मीन्स tan थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, isn't it? a plus b into a minus b is a square minus b square, which is 4 into square root of tan theta whole square का मतलब क्या होता है, tan square theta minus sin square theta, that is equal to 4 into square root of, actually tan theta can be written as sin theta by cos theta, ये है formula, tan theta is equal to sin theta by cos theta, तो tan theta whole square क्या होगा, sin theta by cos theta whole square होगा, मतलब tan square theta का वैल्यू क्या होगा, sin square theta by cos square theta, so tan square theta के प्लेस में what I can write, sin square theta by cos square theta, isn't it? tan square theta के प्लेस में sin square theta by cos square theta minus sin square theta, sin square theta, tan square theta के प्लेस में I have written as sin square theta by cos square theta minus sin square theta, as usual मैंने लिख दिया है, so sin square theta means sin square theta by 1, which is equal to 4 into square root of, यहाँ देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉमन ले लो आप, यू टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है तो आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 1 बाय 1, विच इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sin square theta into 1 by cos square theta. Cos is the reciprocal of secant, so 1 by cos theta is equal to secant theta formula. 1 by cos theta is secant theta, so 1 by cos theta whole square means secant theta whole square, so 1 by cos square theta is secant square theta, so 1 by cos square theta के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ मैं, secant square theta, secant square theta minus 1, 1 by cos square theta can be written as secant square theta, ये वाला है, minus 1 by 1 means 1. So the last steps here I am writing, that is equal to 4 into square root of sin square theta into secant square theta minus 1. Secant square theta minus 1 का वैल्यू होता है tan square theta. Secant square theta minus 1 is tan square theta. How come? I tell you this. 1 plus tan square theta, ये है formula. 1 plus tan square theta is secant square theta, है ना? तो आप एक काम करो, इस 1 को आप राइट साइड में ले जाओ, इस 1 को राइट साइड में ले जाओगे तो व्हाट डू यू गेट हियर, tan square theta is equal to secant square theta minus 1. So secant square theta minus 1 can be written as tan square theta. So that is equal to 4 into square root of sin square theta. It means sin theta. Square root of tan square theta is tan theta. So that is equal to 4 into tan theta into sin theta. Order is not important. 4 into tan theta into sin theta. Equation number 2. So अगर आप देखोगे LHS का वैल्यू लेके हमने सिंपलीफाई किया है, we have got LHS वैल्यू m square minus n square is 4 sin theta tan theta. Okay, let this be equation number 2. हमने LHS का वैल्यू सिंपलीफाई किया है तो we have got 4 sin theta tan theta. RHS का वैल्यू लेकर 4 इंटू रूट mn का वैल्यू सिंपलीफाई किया है तो उसका वैल्यू भी 4 sin theta tan theta. So this is also 4 sin theta tan theta, this is also 4 sin theta tan theta. So therefore LHS is equal to RHS. So therefore from
equations 1 and 2, we could say LHS is equal to RHS. That is, m square minus n square is equal to 4 root mn. Okay.